and a very warm welcome to all of you present over here. We have with us in today's session, our session is about literature and theatre. So we'll have an interactive session hopefully. We have two eminent personalities with us, Shri Atul Tiwariji and Professor Ramakanta Mishra ji, both of whom belong to the world of theatre and cinema, both of whom need no introduction, absolutely. So without wasting much time, let's start. So my first question to Atul ji. Atul ji, how has your journey in theatre been? Theatre, then cinema, fame. How do you see theatre as a foundation? I don't see theatre as a foundation. Because foundation is something which is laid to make a building. कि ये तो अभी नींव है, फिर इसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी हुई. I did not go into theatre. I am not into theatre because it's a foundation to an edifice which is about something else. Theatre, I belong to that building called theatre itself, including the foundations. So I did not lay the foundation of theatre to go into an edifice called cinema. So I have been into theatre because if you are fascinated by theatre, then I don't think there is any other voices like that, any other intoxication like that. There is no other purpose in life like that. So actually speaking, you will not believe me, I never wanted to go to cinema when I started my life in theatre, despite the warnings. And again, you will believe or not, I started in the world of serious, semi-professional theatre at the age of 12. This was accidentally, but at the age of 12, I was a part of whatever was the best theatre in my city of Lucknow. So it was not that I was looking at that time, cinema में जाना है इसलिए थिएटर करना है. थिएटर करना है इसलिए थिएटर करना है. और जब थिएटर करने लगे तो सिर्फ थिएटर ही करना है. नहीं, मैं ये जानना चाह रही थी कि थिएटर की अहमियत क्या है. ड्रामा अगर कोई इंसान पहले करे, क्योंकि हमारे साथ हम एक यूनिवर्सिटी में बैठे हैं जहाँ बहुत सारे लोग खुद भी एक्टर बनना चाहते होंगे, लिखना चाहते होंगे. अगर उनके दिल में ये बात हो तो कोई थिएटर से शुरुआत कैसे करे? थिएटर से शुरुआत ऐसे करें कि थिएटर से तो आपकी शुरुआत बच्चों हो ही जाती है, बहुत बचपन में ही हो जाती है. जिस दिन आपकी मम्मी कहती हैं कि वो टॉफी का डिब्बा कहाँ गया, और आप अभी 3 साल के हैं और आप कहते हैं मुझे नहीं मालूम कहाँ गया, तो आप थिएटर ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी को मालूम है. बल्कि मैं तो इतना बेवकूफ थिएटर वाला था और आज भी हूँ कि मैं जाके कोने में छिप गया एक ऐसी टॉफी का डब्बा लेकर के, और मम्मी ने कहा टॉफी कहाँ है, मैंने कहा नहीं है. तो उन्होंने कहा नहीं तुम छुपा रहे हो. मैंने कहा मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ, देख लो देख लो देख लो, मैं कुछ नहीं छुपा रहा. मैं तो इतना बेवकूफ़ एक्टर था तब भी, अभी उतना ही बेवकूफ़ एक्टर हूँ. तो थिएटर की शुरुआत हो जाती है, हमारे जीवन में थिएटर की शुरुआत हो जाती है. आई एम वेरी हैप्पी कि सर यहाँ बैठे और सर ने इतनी महत्वपूर्ण बातें की. अभी जो ट्राइबल लैंग्वेजेस को लेकर सेशन हो रहा था, तो दोस्तों जो सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि समाज में किसी भी विकास के आने के पहले ट्राइब्स थी, इंसानों की ट्राइब्स थी. वैसे ही मैं सर आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूँ, हम साहित्य उत्सव में बैठे हैं, भाषाओं के उत्सव में बैठे हैं, जहाँ भारत की तमाम भाषाओं के लोग मौजूद हैं. मैं कहना चाहता हूँ कि भाषाओं के पैदा होने के पहले थिएटर पैदा हो चुका है. तो ये भाषाओं के पैदा होने के पहले जो थिएटर पैदा हो चुका था, वो तो हमारे साथ है और रहेगा. अब सवाल ये है कि क्योंकि मैं बचपन में थिएटर करता था तो मैं बड़ा होकर के भी प्रोफेशनल थिएटर वाला बन जाऊंगा? नहीं. सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, आज हमारे बीच में यहाँ पे गिरीश कासरवली साहब बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े फिल्म मेकर्स में से एक,
जिन्होंने जितने नेशनल अवार्ड जीते हैं आज तक भारत में किसी ने नहीं जीते। लेकिन गिरीश कासरवली जैसे जीनियस को पूना फिल्म इंस्टीट्यूट जा करके पहले फिल्म मेकिंग सीखनी पड़ी, और गिरीश कासरवली जैसे फिल्म मेकर ने इतना बड़ा कलाकार होने के बजाय आदर्श फिल्म इंस्टीट्यूट बैंगलोर खोल के कितने लोगों को थिएटर सिखाने का काम किया। तो सीखना थिएटर के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वो सीखें, आप किसी एक इंडिविजुअल गुरु से सीखें, एक इंडिविजुअल ग्रुप से सीखें, या इंस्टीट्यूशन में जाके सीखें। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाएं आप बहुत, अब तो सारे स्टेट्स में खुलने लगे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में खुलने लगे हैं। बहुत महत्वपूर्ण टीचर सत्यव्रत राउत जैसे आपके प्रदेश से निकले हैं, आपके भुवनेश्वर से निकले हैं, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष थे नाट्य विभाग के। फाइंड अ प्लेस बट लर्न इट प्रॉपरली। आज आपका छोटा भाई अगर क्रिकेट खेलना चाहेंगे तो उसको क्या एडवाइस देंगे? बैट उठाओ, जाओ गली में खेलो, हो गया तो इंडिया टीम में पहुंच जाओ। आप उसको एडवाइस देंगे, बेटा हर बच्चा खेल लेता है इतना तो क्रिकेट जितना तुम जानते हो, गो टू एन एकेडमी, लर्न इट फ्रॉम अ गुरु। इफ यू आर गुड एट बॉलिंग, गो टू MRF इन मद्रास। इफ यू आर इवन बेटर इन बॉलिंग, गो टू मेलबर्न एंड लर्न इट। तो वैसे ही मैं आपको एडवाइस दूंगा एक बड़े भाई के नाते, सारे जो यहाँ पे यंग लोग हैं, कि अगर आप रंगमंच में जाना चाहते हैं तो ट्रेन कीजिए अपने आप को। अच्छा, थैंक यू सर। My next question is to Professor Ramakanta Mishra ji. Theatre as an art form, is it alive and kicking, or is it just struggling to survive? हेलो, अभी हो गया। जीवन बंचुवा प्रत्येक मनुष्य जाने जीवन पात्र केवे पूर्ण हुए ना। बाइबल से धाड़ी पड़े, all the rivers flow into the sea and the sea is not yet full। सब नए समुद्र को बही जाती, समुद्र तथापि पूर्ण हुए ना। तथापि घासर बुंदा बुंदा काकर धरी जीवन खड़ा को भर्ती करने को पड़े, जीवन बंचा पड़े। यहाँ थी मोर मधुबाबू नाटक संग्राम। दिस वाज a dialogue from my latest monodrama Madhubabu on the life of the principal architect of modern Odisha. So these days I am into solo. What was your question? My question is, theatre as an art form, is it alive and kicking, or it's just struggling to survive? Theatre, when theatre in its golden days, it was in the mode of entertainment. Then came cinema. Cinema till date is the most powerful medium of expression, because the scope is unlimited, and there is a lot of things you can really, as he is a Atul ji is a writer, film writer, you can really write poetry on celluloid. Theatre is limited because proscenium theatre, that is, you have to have a suggestive setting, or for that matter a realistic one, but still it will fall short. प्यार हुआ, इकरार हुआ, ये स्टेज पे नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। Of course, it was shot in the studio itself in those days. So, theatre, she said, whether theatre is alive and kicking, it is to some extent. Theatre is not dead. Theatre is not on ventilator. Theatre is not in ICU. Because in Odisha, as you say, Bhubaneswar is the center. Yes, right? my question was that, because regional theatre, as we've seen in the last decade, we've seen it has lost its glory. It's not in its full form. Yes. It has lost its glory. Maybe it's just coming back again, and in a much bigger and a better way. So,
That is my question. So what do you think? Is it still Sofia. there? Is it surviving? Is it struggling? Or it has bounced back? You see. In Odisha, we had Annapurna A and Annapurna B. Annapurna A at Puri, Annapurna B at Cuttack. So, the great actors of those days, Samuel Sahu Badi, Priyanath Mishra, Dukhiram Swine, they are all products of the stage. And we also mustn't forget that there is a saying that there is no great actor who has not done Othello. There is no great lady actor who has not done Nora in Doll's House. So most of these Hollywood legends were the products of the stage. They were all proud to be Shakespearean actors. So so far as my theatre journey is concerned, I had been a teacher in English in early women's college, etc. So what did I do? How did I got interested in theatre? I am tempted because Atul ji has that मुझे पता नहीं है. So I am also how the lure of theatre. So I saw in our area in Cuttack district there was a folk dramatist called Vaishnav Pai. So he wrote some musical plays that was known as Swanga, that was a form. So Gopal Chotrai, he gave it a very sophisticated name, Gitilatya. But what he wrote was, I was there, I saw a performance of that Gitilatya Swanga. That is, Krishna is asking Akrura, tell me about मेरे मामा मामी कैसे हैं? कहरे अक्रूरा मोते मथुरा खबर रे कहरे अक्रूरा कुशल रे अछंती ना मामू कंसा चुर रे कहरे अक्रूरा माई माने की करंती मो कथा की पचारंती माई माने की करंती मो कथा की पचारंती अजा उग्र सेन की सब करुछंती मोर रे. So I thought I could also do this, and eventually I did Kansa, and I did it 19 times. Kansa in Gujarat. So I loved it. People said, oh. So ये जो मेकअप लगाना और लोगों की वाहवाही सुनना, it so happened. I am telling you, I was in Rems College. I was in first year B. So there is an inter-class drama competition. And I was pitted against great people like Anubhav Mahanti's father and even Akash Das Nayak's father. They were veterans. So I was in first year, but eventually I was adjudged the best actor. So naturally I thought that I can do theatre. So today, I just say I have been doing theatre, spending money from my own pocket. I never did a ticket, so I will tell you why. Because people donate heavily to anath ashrams, to old age homes, but that is my way of doing social service. I wanted that people should have a taste of Shakespeare. That's why I translated Macbeth. And it was, Sofia, I must tell you, humbly enough, that it was the first time Shakespeare was translated and staged. Beforehand, only Hamlet was done by somebody from Cuttack. And even our great poet, Mahadhar Mansingh, he did Othello. But he did it the way it should have been like. He made Othello Desdemona Drushtadumna and Iago Ahiva. So
this was for the first time. I wanted that people should have a taste of Shakespeare. Shakespeare's wonderful poetry. I am tempted. Are you ready for Shakespeare? Tomorrow and tomorrow and tomorrow keeps in this petty pace from day to day till the last syllable of recorded time. And all our estimates have lighted fools the way to dusty death. Out, brief candle. Life is but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It's a tale told by an idiot, full of sound and feeling, signifying nothing. You mark the Odia. Say Tamu Rakatari Chastakachi. Dino. What a dino. What a dino. What a dino. धीरे धीरे आसे पूरी धीरे धीरे जाए शोषी गई शून्यतार अतल गर्भ को यही खेल चली था समय शेष पृष्ठा शेष फाड़ी शेष अक्षर जाए आम गला काली सब आलुओ देखे निर्बोध मनीष मान को टाणी नहीं जाती सर्वग्रासी बरणार पथे जाओ जाओ लिभि जाओ क्षणिकाय जीवन दीप जीवन एक चलता छाई एक दुष्ट अभिनेता जी दर्पित खाड़ी मंच को आसे केते बाहस्फोट मारे पुणी मुंड नुआई अपसरी जाए निज भूमिका सरिले जीवन एमती जमी मूर्ख कहे गप तुच्छा शब्द विस्फोरण छड़ा जार किसी अर्थ ना एटा सेक्टर मो प्रथम मैकबेथ रोल मु 18 वर्ष बयस करियो पड़ला बिकॉज जो एक्टर मान काली सेमाने शेक्सपियर डिड वन थिंग ही रोट इन वर्स फॉर मेजर कैरेक्टर्स एंड इन प्रोज फॉर माइनर कैरेक्टर्स सो दैट वाज ब्लैंक वर्स I became very faithful to Shakespeare and we talk of literature and theater is literature live living friends. Sir, we have two wonderful actors on stage today in Ramakanta Mishra and in Sofia Alam, who is a great actress. So, इसलिए मेरा नंबर तो आज आने वाला है. Two wonderful actors are present here. लेकिन अतुल है, मुंबई की शान है. हम छोटे या भुवनेश्वर के वहाँ थोड़ा बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं. My next question to Atul ji is, what is the role of literature in theatre? Do you feel it is losing its importance? I mean, the second question comes next. But what is the role of literature in theatre? You need some copy of the stage. Coffee. Thank you, Sofia. Number one, as Dr. Mishra said, that theatre and one of its most major elements, that is drama. I'm talking about the printed or inherited text, is itself a part of the oeuvre of literature. So it's not something, it's also part of literature. Like poetry is literature, like prose is literature, etc., etc., etc. So, like whatever ChatGPT is creating is also literature, whether we agree with it or not, with artificial intelligence. So, in the same way, drama is also literature. So, it's not something that it is not literature. That's why Sahitya Academy sometimes honors dramatists and sometimes can make dramatists their chairperson, like the last chairperson. Kambar Sahib was there. Chandrasekhar Kambar Sahib was there. But now you said that what is the other kind of a relationship with literature and theatre? So that's also true that sometimes theatre has borrowed its stories, its plots, its characters from different literary oeuvres, different literary genres. It could be a novel, it could be a story, it could be a poem. So we are welcoming anything and anywhere the ideas are coming for theatre. Whether it has been through great novels which have been sometimes turned into a piece of theatre. I can give you some of the examples from Hindi.
For example, Manu Bhandari's many novels have been converted to theatre. Many other novelists have been converted to theatre. Sometimes we take poems, like Mukti Bodh's poems have been taken and then converted into theatre. And I would definitely like to take one name here, very important. That name is Devendra Raj Ankur. Devendra Raj Ankur was a product of the National School of Drama and later on became the director of the National School of Drama. But in between, when he graduated from the School of Drama in mid-70s, I think 74 or 75, and I was again active in theatre as a 14-year-old. I was in my high school when he came to Lucknow from the National School of Drama to do his plays, and he said, I have decided to work only on short stories and novels. And he always took a short story and then presented it on stage. He did not adopt the short story into a drama. He never cut down whatever Premchand had written, or any other Barupul had written, or any other short story had written, or Anandamurthy ji had written in a short story. Because, as you know, that theatre works in the dialogue scape. Dialogue scape means playwright will write that, well, this is the atmosphere. Thank you, Peter. Playwright will write that this is the atmosphere. There is a classroom, there are some seats there is a munch there, 3 people are sitting on the munch. The audience is very thin. And then what happens that a Shakespearean actor from the stage starts reciting lines of Shakespeare, and the audience claps, but suddenly a madman gets up and he says, "You are wrong, Mr. Mishra." And then he starts quoting Shakespeare in the original, etc., etc. So there is a direction that a madman starts speaking Shakespeare, and then there will be lines. It's basically the dialogues which constitutes theatre. Whereas a story and a novel work in the mind scale. How there will be a full description. शाम हो चली थी, हल्की सी ठंडक मौसम में आ गई थी क्योंकि नवंबर का महीना था। उस ठंडी सी बयार में अचानक एक गर्मी उठी जब एक पागल थिएटर से उठ गया और चिल्लाने लगा, मिस्टर मिश्रा, यू आर स्पीकिंग रॉन्ग। तो ये लाइनें भी जो थी, देवेंद्र राज अंकुर ने इन लाइनों को काटा नहीं, उन्होंने उनको थिएटर डायरेक्शन नहीं बनाया, उनका एक नरेटर आकर के ये लाइन कहता था, शाम हो चली थी, हवा में हल्की सी ठंडक थी क्योंकि नवंबर का महीना था। तभी अचानक क्या हुआ, और अचानक वहां से एक आदमी बोलने लगे और वो हट जाएगा। सो ही केप्ट द वर्ड्स ऑफ द playwright or the novelist also as the text of the play on stage. That was a very revolutionary change. Sometimes the same man could be the narrator and the actor himself, making it even more beautiful for the audience, this magic of transformation, transmutation from one into the other in a second's time. So his name is very important in fusing the literature and theatre in a beautiful way. It's called Kahani Ka Rangmanch, and he was in a way the first self-declared man to be using and doing only this for last 50 years that Devendra Raj Ankur has been working. He has done only this. So it's also an interesting thing. Now everybody is trying to do it. Now Nasruddin Shah is also doing it, and Ratna Shah is also doing it. Many of the students of National School of Drama are also doing it, because in the paucity of the good plays, they've got another good method of bringing new content. Because short stories, there are bharmar of short stories in all the languages. And without going through the process of dramatizing the short stories, that becomes drama itself. So do you feel that the richness in content in terms of literature is going down, or is it same, or it needs to be worked on? Well, especially for contemporary theatre. Do you feel sometimes that okay, please answer this. Sofia ji, this going down thing is something which is bound to happen in nature. I'm saying nature. Whether it's the nature of theatre, nature of cinema, nature of literature, it cannot be at a constant. Or the graph cannot only be like this. The graph sometimes goes like this, then comes like this, then goes like this, then comes like this. As they say,
that a line going up and down is a very good thing, and it tells you that the patient is alive. The straight lines only come from the dead people. So whatever is alive, whether it's the society, whether it's cinema, whether it is literature, the lines will go up, lines will come down. It cannot be a constant line or only going in one direction in one way. It doesn't happen. Indian cricket team's graph also was like this through the World Cup, and suddenly in the last match it came like this. This will happen. And sometimes this thing, that kind of crying, I'm sure that if you ask Girish, how is the Munafar Institute? He'll say that, ab wo baat nahi hai. If you ask Atul Tiwari, how is the National School around? Ab wo baat nahi hai jo hamare time mein thi. We were the best. And I'm still the best. हमारे टाइम में जो था वो इनके टाइम में है नहीं। इस स्कूल को पता नहीं 10 साल में कितने में बिल्डिंग बड़ी नहीं लग रही। यहाँ के स्कूल से मुझे नहीं, पहले के बैच की बात ही अलग थी। तो नॉस्टैल्जिया एक ऐसी चीज होती है जो हर एक को बहुत खूबसूरत बना देती है। और कब तो अभी तो लोग कहते हैं नॉस्टैल्जिया, आपको क्या नॉस्टैल्जिया होगा? हमारे टाइम में तो नॉस्टैल्जिया भी अलग किस्म का होता था। हम तो नॉस्टैल्जिया के लिए नॉस्टैल्जिक रहते हैं। तो ये सब बातें सही नहीं है। हाँ, बहुत सी चीजें नीचे जा रही हैं भारत में। आई डोंट नो, आई कैन नॉट से अबाउट गवर्नेंस नीचे जा रही है कि नहीं जा रही है, मुझे पता नहीं। लोग कहते हैं विकास, हेलो लोग क्या हुआ, कुछ आवाज चली सी गई। हाँ जी ठीक है। हेलो हेलो, कुछ रिक्त है, विकास का नाम लेके इसने बंद कर दिया। हेलो भैया, अच्छा दिल्ली से देखा लोग जी, देखिए तो लोग कहते हैं कि नहीं देश के ऊपर ही ऊपर बढ़ रहा है, बहुत विकास हो रहा है। और मैं कभी अपने आप में सोचता हूँ कि अयोध्या में और लंका में कौन अधिक विकसित था? कोई जवाब देगा क्या? अयोध्या लंका में कौन अधिक विकसित था? मुझे तो लंका अधिक विकसित लगती है। ऐसा उसका वर्णन है जो किया है कि वो 35 मील ऊंचा एक किला था, वो भी सोने का बना हुआ था। वहां पे हवाई जहाज चलते थे भाई साहब। पुष्पक विमान तो उधार में लेके रामचंद्र जी को अयोध्या आना पड़ता, वरना 14 साल लग जाते पहुंचते पहुंचते। तो रामचंद्र जी को इतना विकसित था। और एक मेरी अयोध्या थी, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, अवध का रहने वाला हूँ। एक मेरी अयोध्या थी जहां सिर्फ एक चीज विकसित थी, वो थी मूल्य, द वैल्यूज। वहां राम राज्य स्थापित हुआ। और राम राज्य का पता नहीं, राम राज सब लोग करते हैं, लेकिन राम राज्य के किसी ने डेफिनेशन पढ़ी है? वाल्मीकि में राम राज्य की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो राम राज्य वो है जहां सब बराबर हो, वो किसी भी मत और संप्रदाय के हों। राम राज्य वो है जहां विधवा, अनाथ, बूढ़ा, बूढ़ी और बच्चों की आपको रोने की आवाज नहीं सुनाई। इसलिए नहीं कि गला दबा दिया जाएगा बेटा रोगे तो, इसलिए कि इतने खुश रहें कि विधवा भी ना रोए। ये एक पैरामीटर है राम राज्य का, जहां पर्यावरण इतना संतुलित हो कि पेड़ सुगंध दे, नदी का मीठा पानी हो और फल समय पे आए, फसलें समय पे। तो मैं तो ऐसे मूल्यों भरे समाज में रहना चाहूंगा। मैं विकासशील लंका में मैं तो नहीं रहना चाहूंगा। मुझे तो पता नहीं, आप लोग अपना अपना तय कर लें कि किसको लंका में रहना है, किसको अयोध्या में रहना है, और उसी हिसाब से अगले साल वोट भी देना है। तो सब कुछ बदलता है, थिएटर भी बदलता है, ये भी बदलता है। ये बात सच है कि प्ले राइटिंग की मात्रा बहुत कम हो गई है और अच्छे प्लेस जो मंच पे हो सके वो बहुत कम हो गए हैं। लेकिन बाकी साहित्य में करना कि नहीं सब कुछ नीचे ही चला गया है, वो शायद सही नहीं है। शायद हम लोग उस साहित्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अलग तरह का साहित्य भी डेफिनेटली लिखा जा रहा है, क्योंकि लिखना हो सकता है भाषा बदल गई। हम ही ने अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में भेजा ना, हमारे पड़ोसी ने थोड़ी ना भेजा था। हम ही ने अपने बच्चों को पहले अंग्रेजी स्कूल भेजा, जो भी कैलकुलेट करके। अब हम रो रहे हैं कि वो अंग्रेजी नहीं बोलता, ग्रैंडफादर से बात नहीं कर पाता। तो भैया कौन, किसी गलती किसने, एडमिशन में किसने साइन किए थे फॉर्म? मैंने तो नहीं किए थे वैसा, मैं तो हिंदी स्कूल में पढ़ा। अभी भी हम देखते हैं कि हमारी नई जनरेशन में जो भी वाला हिंदी स्कूल में पढ़ा, अंग्रेजी की तरफ देखे भी नहीं। और उसके बाद भी सर शेक्सपियर सुना रहे थे। मैंने 10 शेक्सपियर के नाटक अनुदित किए हैं। मैं दुनिया भर में जाके शेक्सपियर के नाटक करता हूँ, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। हिंदी स्कूल में, पटरी स्कूल में, म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ने के बाद जब सीखना होता है तो आदमी सीख लेता है।
तो सब कुछ बदलता है, ये भी बदलेगा और फिर ऊपर आएगा। अभी सर ने कहा कि उड़ीसा में ऐसा ऐसा हो रहा है, जरूर हो रहा होगा, थिएटर को लेकर सर ने बात की। हम बात करें अगर सिनेमा की, तो एक जमाने में बंगाल सबसे आगे था। बंगाल का सिनेमा मतलब सत्येंद्र रे का सिनेमा मतलब वाह, मृणाल सेन का सिनेमा मतलब क्या सिनेमा था। गिरीश कासरवली ने एक हेलो हेलो, इसे लीजिए आप अतुल जी, इसे हेलो हेलो, ये लीजिए। बैटरी बदलना बेटा, चलो। गिरीश कासरवली जब से आए तो कन्नड़ सिनेमा कहाँ से कहाँ पहुंच गया था एक जमाने में। कन्नड़ कला सिनेमा की बात करें, उसके बाद में कन्नड़ कला सिनेमा और बाकी सिनेमा कहाँ गायब हो गया पता भी नहीं था। आज फिर उसके 30 वर्षों बाद कला सिनेमा का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एक केजीएफ बनती है तो पूरे भारत में बिना किसी संस्था के सपोर्ट के देखी जाती है। अगर कंटारा बनती है तो बिना किसी संस्था के सपोर्ट के पूरे भारत में देखी जाती है। फिर वहां कर्नाटक पहुंच गया, भले कला सिनेमा नहीं पहुंचा, कमर्शियल सिनेमा पहुंच गया। ये चक्र है, जो ऊपर जाता है नीचे आता है, जो नीचे आता है ऊपर आता है। इसमें इतनी परेशानी की बात नहीं। Sir, do you feel